First sum of exercise 3.4, they have told that for x is equal to 0 find the value of polynomial. Now here the polynomial is given to you. Okay, now in such kind of sum what to do here? For x is equal to 0, अगर आपको x का वैल्यू 0 दिया है and they have told you to find the value of the polynomial, एक polynomial दिया है आपको, उसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है. So how to do that I am going to explain you in this exercise, right? So polynomial is x square minus 5x plus 5. Now this is a polynomial and this is a x value of x is there. They have told you to find the value of this polynomial. What to do? Very simple thing. Whenever this kind of sum comes, what you have to do? You have to write in this way. You know how to represent the polynomial that we have studied in the introduction part. That polynomial is represented as p of x, q of x, right? So I will represent p of x. Now why x? Because x is a variable. Now here x is term is used, therefore I will use x. Because यहाँ पे ये देखिए polynomial में भी कौन सा variable use किया है, x का, तो मैं p of x ही use करूँगा, right? आप q of x भी ले सकते हैं, it doesn't make any difference. So p of x will be equal to x square minus 5x plus 5. Now what to do here? Simple thing कि what is the value of x? x का value क्या है, 0 है ना. So wherever you see the x in this polynomial, you put a 0, substitute 0. So I will put here, instead of x I will put 0. Now 0 square minus 5 into 0 plus 5. So what I will get here? Therefore p of 0 is equal to 0 square means 0, 5 into 0 means 0, and remaining is what, only 5. So you got 5. So you got the value of this polynomial, that is 5. Correct? It is as simple as that. What you have to do whenever such kind of sum is come, okay, you have to write p of x is equal to whatever the polynomial is given, x square minus 5x plus 5, it is given here, and see the value of x. If x value is 0, then substitute 0 wherever x is there, and if x value is 2, you substitute 2, whatever value is there, and you will get the value, and this is only the answer. Getting? Okay. We will try one more sum. Now here they had given a polynomial, that is p of y is given, that is y square minus 3 root 2 y plus 1. They have told us to find p 3 root 2, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है. Now this is also same type of sum, but in a different manner they had given. So here also what you have to do, the same thing. See, the polynomial is given in terms of variable, that is y, right? So what you will write? First of all you will write this polynomial p of y is equal to y square minus 3 root 2 y plus 1, correct? Now what you will do? Now see here, what they have told, find p bracket 3 root 2, right? P of 3 root 2. So instead of y, आपको जहाँ पे भी y दिख रहा है, ये देखिए ये y है यहाँ पे सब जगह, ठीक है, वहाँ पे आप कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 रूट 2. सो आई विल राइट देयरफॉर इंस्टेड ऑफ y आई विल सब्स्टिट्यूट 3 रूट 2. सो y स्क्वायर है तो 3 रूट 2 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 इंटू 3y है ना, तो 3 रूट 2 प्लस 1, right? Now you solve this. Now 3 3s are 9 and root 2 into root 2 root 4. Root 4 means 2. So 9 2s are 18. Now here also same thing will be happen, 18 it will be, but it will be minus 18 because यहाँ पे देखिए minus sign है, plus 1. So this will be what, plus 18 and minus 18 get cancel. So it is remaining 1. So आपको मिल गया p of 3 root 2 का वैल्यू क्या है, यही पूछा है, फाइंड p of 3 root 2, that is 1. You can note down this sum.
Getting? Okay. Take down the homework. Homework will be the fourth sum, that is, if p of y is equal to 2y cube minus 6y square minus 5y plus 7, then find p of 2. Same thing you have to do, whatever I have done in this sum, last sum. Okay, instead of y you will substitute 2 there and you will get the value of p of 2. Correct? So that you can do, that is your homework. So we have done with this exercise 3.4. You can note down this homework. Okay, it is there in your textbook also. Check the sum, exercise 3.4, fourth sum it is, or you can note down from here also, that you have to do it. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Now we'll move to the exercise 3.4. Okay, that is a little bit different sums. So let us see that 3.4 sums. Sorry, 3.5. 3.4 we have done, now 3.5. Okay, now see, come to exercise 3.5 everybody. So 3.4 was a very short exercise. Okay, now let us move to the 3.5. Now in this first question they have told कि find the value of the polynomial 2x minus 2x cube plus 7 using the given value for x. देखिए ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, यह क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है. सो प्लीज़ refer the question. If you want to refer the question, refer it from the textbook. Okay, and what they have told, they had given the value of x as 3. एक polynomial दिया है. Okay, वो polynomial मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. The polynomial is 2x minus 2x cube plus 7. ये polynomial आपको क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है, and they have told कि find the value of this polynomial जब x का वैल्यू 3 होता है. तो सेम थिंग यू हैव टू डू. ओके, सेम थिंग यू हैव टू डू. सो व्हाट यू विल डू हियर ऑल्सो सेम थिंग. Solution, you will write p of x. First of all you will represent this polynomial, that is 2x minus 2x raised to cube plus 7. करेक्ट, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं polynomial को. और they have told in first, देखिए ये फर्स्ट सम है. ठीक है, फर्स्ट सम का फर्स्ट है ये, तो उसमें फर्स्ट सम का फर्स्ट है ये. ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चन है फर्स्ट में ही. तो पहले में x का वैल्यू 3 दी है. ठीक है, सो wherever you see the x, put it as a 3. So p of 3 is equal to 2 into 3 minus 2 into 3 cube plus 7. Correct. Now you solve this. What you will get? 2 3s are 6, 3 3s are 9, 9 2s are 18 plus 7. Correct. So what is remaining? देखिए sorry, it is cube, no, I am sorry. 3 3s are 9, 9 3s are 18, 18 2s are 3 3s are 9, 9 3s are 27, right? And 27 into 2 becomes what? 54. Correct. Plus 7. So 6 minus 54 becomes what? Minus 48 plus 7. So final answer is what? 48 में से 7 कम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा -41. दिस इज योर आंसर. गेटिंग? तो p of 3 मिल गया आपको. सिमिलरली दे हैव गिवन मोर 2 क्वेश्चन इन दिस ओनली. सपोज अगर x का वैल्यू 3 के बदले अगर -1 है, सो व्हाट यू विल डू? सेम थिंग यू विल डू इट हियर.
ओके एंड थर्ड क्वेश्चन दे हैव टोल्ड सपोज x का वैल्यू अगर 0 है तो व्हाट यू विल डू. तो ये आप करिए, ये आप ट्राई करिए. इंस्टेड ऑफ 3, जैसे यहाँ पे 3 पुट किया था मैंने, तो वैसे ही आप यहाँ पे -1 पुट करके देखिए इंस्टेड ऑफ 3. तो आपको आंसर क्या आएगा, आप यू हैव टू चेक इट डाउन. ओके एंड देन यू पुट अ 0 एंड यू चेक डाउन, सो यू विल गेट द आंसर्स. ठीक है, सिमिलरली सम से, सेम टाइप के सम से. ओके, आई होप यू कैन डू दैट. ओके, यू कैन टेक दैट एज अ होमवर्क, that you can do. Clear? Okay, now next question number 2. I'll read it. Question number 2. For each of the following polynomial find p of 1, p of 0 and p of -2. देखिए फाइंड क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है, p of 1, सेकेंड है p of 0 एंड p of -2. Okay, for each polynomial. देखिए first polynomial they had told us that is p of x is equal to x cube. This is first polynomial. Okay, so what you will do here, हर एक polynomial के लिए आपको p of 1, p of 0 and p of -2 फाइंड करना है. So first p of 1 will do. ठीक है, ये polynomial के लिए p of 1 will do. So जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 पुट करिए and 1 cube. तो you know what is the answer of this, 1 क्यूब का आंसर क्या है 1, तो आपको p of 1 मिल गया. करेक्ट. नाउ सेम पॉलिनोमियल के लिए p of 0 भी फाइंड करना है आपको. तो p of 0 इंस्टेड ऑफ 1 अब 0 पुट करिए, तो 0 क्यूब, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा 0. तो p of 0 क्या है 0. एंड लास्ट वन इज व्हाट, p of -2. अब आप x के बदले -2 सब्स्टिट्यूट करिए, तो -2 क्यूब, so you will get 2 2s are 4, 4 2s are 8, right, -8. so that's it. तो आपको तीनों वैल्यू मिल गया, p of 1, p of 0 and p of -2. ऐसे ही और दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं आपको. ओके, सो विल डू वन मोर पॉलिनोमियल एंड वन सम यू कैन डू इट. ओके, दैट यू कैन ट्राई. ये क्लियर हो गया आपको किस तरह से करते हैं इसको, खाली आपको सब्स्टिट्यूट करना है. Instead of x you have to put this values, that's it, nothing to do more. चलो we'll do this kind of sum one more time. ठीक है, एक और सम करते हैं ऐसा. सेकेंड पॉलिनोमियल they had given as p of y is equal to y square -2y plus 5. ये पॉलिनोमियल में अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है p of 0, p of 1 and p of -2. so we'll do it. first p of 1 will put. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया यू हैव टू फाइंड द p of 1, p of 0 and p of -2. तो इंस्टेड ऑफ y will put 1, so 1 square -2 into 1 plus 5. solve this, what you will get, 1 square is 1, 2 1s are 2 plus 5. so 1 minus 2 is -1 plus 5. so 5 minus 1 is 4. so p of 1 I got, that is 4. आप नोट करके इसको रख दीजिए, p of 1 I got 4. now next is p of 0. so instead of 1 I'll put 0. so p of 0 is equal to 0 square minus 2 into 0 plus 5. so मुझे आ जाएगा आपका यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 होता है, -2 into 0 means 0 plus 5. so p of 0 I got 5. इसको नोट कर लीजिए, p of 0 is also 5. so I got p of 1, I got p of 0. what is remaining, p of -2. अब p of -2 फाइंड करना है. चलिए करिए आप लोग भी. ओके, यू ऑल्सो ट्राई p of -2. now I'll rub this part, I'll do in the next page. p of -2, same polynomial. okay, so -2 square minus 2 into -2 plus 5. करेक्ट, सेम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया. so -2 square is what, 4, -4, 2 2s are 4 plus 5. so 4 plus 4 8, 8 plus 5 13. so p of -2 is 13.
So I got p of 1, p of 1 as 4, p of 0 is 5, and p of minus 2 is 13. I hope you are getting these sums. Okay, just to substitute the value instead of x and do the calculation, you will get it. Try third sum, okay, that you do second question number second ka third sum that you try. Okay, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ विल मूव. Question number 3. Now see the question number 3, exercise 3.5. Okay, just check. Question is what? If the value of the polynomial, एक polynomial आपको दिया है, वो polynomial में लिख देता हूँ m क्यूब प्लस 2m प्लस a is 12. अगर ये polynomial का वैल्यू 12 है और m का वैल्यू 2 है, then find the value of a. Now what they have told in this question, in question number 3, कि if one polynomial is given, that is m cube plus 2m plus a, जिसका वैल्यू 12 है और जहाँ पे m का वैल्यू क्या है 2 है, तो find the value of a. Then they have told the find the value of a. So how to do this kind of sum? Pay attention. So first of all, represent this polynomial in a proper manner. So p of m, I am using the variable m because m variable is used in this polynomial. So m cube plus 2m plus a. Correct? Now instead of m, I will substitute 2 because they have told na m का value is 2. So instead of m, जहाँ जहाँ m है वहाँ पे क्या substitute करेंगे 2. So this will be 2 cube plus 2 into 2 plus a. A I don't know because A I have to find. यही तो question है आपको. A you have to find out. So P of 2 is equal to 2 cube is what? 8 plus 4 plus A. Right? So P of 2 is equal to 8 plus 4, 12 plus A. But we know what is P of 2. Yes, they have told. P of 2 is what? 12. ये given है. P of 2 is what? 12. How? See here, in the question they have told the value of this polynomial is 12. So P of polynomial, ये polynomial का वैल्यू क्या है 12 है और ये polynomial को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें P of 2 से ना, तो P of 2 का भी वैल्यू क्या होगा 12 होगा, तो ये पूरे polynomial का वैल्यू क्या है 12. So instead of P of 2 I will write 12. So that is given to you. So 12 is equal to 12 plus a. Correct? So 12 get cancel. So a का वैल्यू क्या आ गया आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a is 0. So final value a is what? 0. Are you getting what I have done? Just check it this sum. यहाँ पे देखिए सेम थिंग पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया है और m का वैल्यू दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिप्रेजेंट इट इन अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, देन सब्स्टिट्यूट m वैल्यू एज अ 2, solve it, and once you got p of 2 is equal to 12 plus a, then p of 2 is equal to 12. Why? Because they have told that the value of this polynomial is 12. So instead of p of 2 I will write as 12. So 12 is equal to 12 plus a. 12 get cancelled and a is 0. So you got what you have to find, value of a is 0. Now question number 4 is also same kind. ऐसे exactly same kind का sum है question number 4 also. Okay, that also I will do for you, but it is exactly similar. This is clear? Okay. Now question number 4 is also exactly same. Let us do that also. Here also they have told for the polynomial, one polynomial is given to you, that is m square minus 2x plus 3. If they have told that p of minus 1 equal to 7, then find a. So what you will do here, same thing, first represent this in the polynomial form, that is p of m, p of x I will write, is equal to mx square minus
2x plus 3. करेक्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ x आई विल सब्स्टिट्यूट 1 बिकॉज यहाँ पे -1. देखिए यहाँ पे -1 है ना, p ऑफ -1. तो जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे -1 आ जाएगा, राइट. और m तो आपको फाइंड करना ही है. सो x के बदले क्या आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला है p ऑफ -1 क्या है, वैल्यू उसका 7 है. सो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1, राइट. तो m -1 स्क्वायर -2, x का वैल्यू क्या है -1 प्लस 3. सो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर इज 1 only, right. So it will be m minus minus plus 2 plus 3. So p of -1 is equal to 5. Now you know what is the value of p of -1. p of -1 का वैल्यू क्या है, what is the value of p of -1. देखिए यहाँ पे दिया है 7 है, तो राइट 7. दिस इज गिवन टू यू, ओके. सो इंस्टेड ऑफ p of -1 इक्वल टू 7 m प्लस 5, तो आपको क्या आ जाएगा, 5 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो इट बिकम 7 minus 5. So it will be what, m is equal to 2. So you got the answer, m is equal to 2. Correct. Same thing you have to do, just a twisting is there in the sum, but rest the things are same. Okay, are you getting this kind of sums? Easy it is also, right. ओके. सो आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ हियर. ठीक है, और कुछ होमवर्क आपको मैंने दिया है वो सम्स, वो आप ट्राई करिए. सो विल स्टॉप फॉर द डे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज 3.5. थैंक यू स्टूडेंट्स.